सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका बायोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड एनसीईआरटी ट्रिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके हार्मोन्स के बारे में। द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, hence called master gland. The pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica and is attached to hypothalamus by a stalk. It is divided anatomically into an adenohypophysis and a neurohypophysis. तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। द पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी, कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, प्रोड्यूसेस 6 हार्मोन्स। आज हम इन्हीं 6 हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके ट्रिक के बारे में जानेंगे। द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस इज पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया secretes only one hormone called melanocyte stimulating hormone, MSH. Melanocyte is the melanin pigment containing cells. Now we will see neurohypophysis. Neurohypophysis, also known as pars nervosa, is the posterior pituitary which does not produce any hormone. It only stores and releases 2 hormones which are actually synthesized in hypothalamus. These 2 hormones are oxytocin and vasopressin, also known as ADH, antidiuretic hormone. Now we will see all the 6 hormones produced by anterior pituitary. The first hormone is thyroid stimulating hormone or TSH, adrenocorticotropic hormone ACTH, then luteinizing hormone LH, follicle stimulating hormone FSH, growth hormone GH, and prolactin PRL. These are the 6 hormones produced by anterior pituitary. Now I will tell you the tricks to learn these 6 hormones. So the trick to learn the hormones of anterior pituitary is PG flat. You can learn as PG and flat. So what is P and G here? P is for prolactin, that is PRL, and G for GH, that is growth hormone. Now what is flat? F denotes for follicle stimulating hormone, that is FSH. L for luteinizing hormone LH. A for ACTH, adrenocorticotropic hormone, and T for TSH, that is thyroid stimulating hormone. So you can learn all the 6 hormones of anterior pituitary as PG flat. And now I will give you the tricks for pars nervosa, also known as posterior pituitary. For posterior pituitary hormones, you can use OX and AD. OX and AD is advertisement. So OX denotes for oxytocin and AD denotes for ADH, antidiuretic hormone or vasopressin. So you all can write these tricks in your NCERT textbook. इन ट्रिक्स से आप इन सारे हार्मोन्स को अकॉर्डिंगली याद कर सकते हैं। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट।